Okay, Bhaiya, you can start, I think. Hello, everybody. Good evening to all my dear brothers and sisters. And this is actually, we are very much happy to announce that we are going to support or guide you all to get this balanced diet and nutrition can help us to balance our whole system. And now it's actually the theme where we are going to get into the fasting management and through which we have to reduce the lifestyle through the lifestyles, nothing but the lifestyle changes to reverse our weight, losing the weight from the obesity and fatty liver and diabetes. Yes, Bhaiya. Okay. सबको जय श्री माता जी, सबको वेलकम। आज हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ में डाइट से क्या बदलाव, हेल्थ के लिए डाइट में क्या बदलाव ला सकते हैं, और उससे पहले तो वेट लॉस हो सकता है, उसके बाद फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं, डायबिटीज वाले प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। वो कैसा, हमने बहुत 100 से ज्यादा लोग को देखा जिनका बहुत आराम से बदलाव आ गया है, और डायबिटीज में भी उनके इंजेक्शंस जो ले रहे थे वो उनका भी कम हो गया, जिनका टैबलेट्स लेते थे उनका भी कम हो गया, फैटी लिवर रिवर्स हो गया, वेट बहुत आराम से 10-15 किलो यानी 10% आराम से कम हो रहा है। ओके, और यही बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी ये वॉइस चैट में है, मैं उनको बताऊंगा कि वॉइस चैट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली अभी जो जूम कॉल है उस पर आ सकते हो। प्लीज कम ऑन द जूम कॉल। Yeah. So first we are going to know this is actually the fasting way. Why we have to fast? Fasting is needed or not? Is it we really fasting here or not? If we fast, fasting means those before we used to do like fasting like morning to evening. It's not like that. Fasting in sense night is going to be, fasting like 16 hours. That how it's actually help us in our physiological process in our life. So here the fasting method, the intermittent fasting method, we should understand that 8 hours we can eat. Like it's eating like with the 2 meals. So just we are waiting, Bhaiya, or they are asking for the voice chat. No, I'm telling them not to join voice chat. Please come out. Yeah, because सब लोग 140 लोग यहाँ ही है ना, 140 people are here. No need to go for voice chat, and voice chat we can't share the screen. Screen नहीं share कर सकते ना, है ना। So पहली बात ये है, अभी देखिए सब लोग ये देखिए, हम लोग 2 इम्पोर्टेंट चीज यहाँ बात करेंगे डाइट में। वेट लॉस का 2 तरीका है, एक तो डाइट करना, दूसरा एक्सरसाइज करना। और इतना एक्सपेरिमेंटेशन हो गया है कि वेट लॉस से 95% वेट लॉस डाइट से होता है, 5% बदलाव एक्सरसाइज से होता है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, 200 लोग का एक्सपेरिमेंट किया था, और उनको उसमें 100 लोग को लिए वेट लॉस प्रोग्राम में रखा था डाइट के थ्रू, और दूसरे 100 लोग को एक्सरसाइज पे रखा था। तो जो 100 लोग ने जो डाइट पे किया था उनका वेट ऑन एन एवरेज 11.5 केजीज घटा, और जिन्होंने एक्सरसाइज किया उनका 0.5 केजी घटा। ठीक है, ये बदलाव है। इसके वजह से डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना वेट लॉस में। उसमें पहला चीज, जैसे भैया बता रहे, पहला चीज क्या है कि 2016 में एक जापान साइंटिस्ट को इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला, और वो नोबेल प्राइज के बारे में, वो नोबेल प्राइज किसके लिए है? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए है, जो ऑटोफैगी होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 16 घंटा आपको फास्टिंग करना है, 8 घंटा खा सकते हैं। यानी लाइक से अगर 10 बजे, सुबह 10 बजे खाया, शाम को 6 बजे आपका डिनर खत्म। ओके, शाम को 6 बजे से पहले डिनर खत्म होना है। ठीक है, ये पहली बात है। ओके, अगर 9 बजे सुबह खाया तो शाम को 5 बजे खाना है, या 5 बजे तक खत्म। राइट भैया, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। Yes. So first, actually, before going to the fasting, actually, how actually it is good for us, or it creates some problem for us, we should know first.
So for that, what is the science behind this intermittent fasting? You want to translate, भैया? हाँ, पहले थोड़ा साइंस समझते हैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का के पीछे क्या शास्त्र है. And is it good or bad? We should know whether we are going to fast or is it actually cause some damage for us. So fear. First, we have to take out the fear. Because there are many hundreds of people have got very, very good results and they are very healthy now. You know, after that 100 days, uh, very strictly followed the diet, they become very nice after that. There is no any issues. That is why, how, what is happening inside and the science behind it, you just see that. क्योंकि अभी क्या करेंगे, 100 दिन में ये जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, हाई प्रोटीन हाई फैट खाएंगे, तो क्या बदलाव आता है आपको. आप देखोगे कि आपका पहला लिवर बहुत हेल्दी हो जाएगा, आपका इंसुलिन लेवल हर वक्त कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं. ओके. और ये जो 16 घंटे का गैप जो रहता है ना, उसमें लिवर बहुत हेल्दी हो जाता है. एक चीज बोलते हैं कीटोसिस, किक ऑन करता है. कीटोसिस करने से क्या होता है, जो हर सेल का ग्लूकोज चाहिए है ना, ग्लूकोज जो बाहर से आता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते उससे आता है, वो बंद हो जाएगा. और हर सेल क्या करेगा, ग्लाइकोजन लेने लगेगा. यानी अपना बॉडी में ही जो फैट है ना, वो फैट में से वो अपना एनर्जी लेने लगेगा. उससे क्या होगा, वो फैट बर्न होगा. जो फैट है, जो अपना फैट है वो बर्न होने लगेगा. और उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है अपना शरीर में भी और दिमाग में भी. बहुत मेटाबॉलिज्म आप देखा होगा, जब भी ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया हुआ है, जब भी आप फास्टिंग करते हो तो आप देखोगे कि अगला दिन, फास्टिंग कर रहे हो, अगला दिन अभी तक खाना खाया आपने, ब्रेकफास्ट नहीं खाया, फिर भी और ज्यादा ताकतवर बन जाते हो, है ना. ये देखा होगा. ओके, अभी और आगे बढ़, प्लीज Yeah. कंटिन्यू. Actually, here, what is intermittent fasting? Timing eating periods and alternating fasting and eating windows period. For example, you know, if you start like 10 o'clock or 8 o'clock, if you take the food morning, we have to take at least 8 hours up to that. We have to take up to 5 o'clock. 9 means 5, 8 means 4, right? Bhaiya? We have to just check the 8 hours duration must be in the eating period. And we should not take the food, whatever the foods we are taking at every 1 hour to hour. It's not like that. We have to take 2 meals. We have to take only 2 meals. And it should be, what are the foods it must be contained. It's very, very, very important. We are not just taking whatever now, before what you taken in the house, right? For example, if you are taking 4 chapatis, 4 barotas, and something like very minimal amount of fat and minimal amount of protein, and you are not taking such a good way of balanced diet. Now we are going to take very much balanced diet, even we will be very much healthy even before. अभी क्या है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज है. पहला तो टाइम. आप 8 घंटे का खाने का विंडो रहता है और 16 घंटे का फास्टिंग का विंडो रहता है. तो 8 घंटे का खाने का विंडो, अगर सुबह 8 बजे खाया तो शाम को 4 बजे तक डिनर खत्म. दो ही मील होता है, ठीक है. और अगर पहला मील 9 बजे खाया, 5 बजे तक अपना डिनर खत्म. या 10 बजे, सुबह 10 बजे खाया, 6 बजे तक डिनर खत्म. शाम का डिनर जो है, सूरज ढलने से पहले ही खा लेना है ना, 6 बजे से पहले. और दूसरा, ये जो पौष्टिक आहार है, अभी जो खाना खाएंगे वो बहुत पौष्टिक आहार हो. हम लोग कार्बोहाइड्रेट इतना खा रहे थे, यानी चावल रोटी के लिए अपना जो व्हीट है, गेहूं है, ये सब ना, ये इतना इतना ज्यादा खा लिया. ये खाना जरूरी था जब हम खेतों में काम करते थे. अभी खेतों में काम नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, मगर फिर भी उतना खा रहे. तो क्या करता है बॉडी, वो जो खाना लेता है ना, वो बॉडी फैट में तरह कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है. इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना ये 100 दिन में. अभी बट उसके बदले में और भी पौष्टिक आहार क्या है, अभी बात करेंगे. प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स, फाइबर युक्त खाना होगा, ताकि बॉडी बहुत ही हेल्दी रहे. Yes. Actually, again, I'm going to say about here. We are fasting. Okay, in that fasting time, what is happening to our health? If you know this truth, everyone can enjoy. Not only obesity person, not only the diabetic person, everyone can enjoy this and getting such a healthy food.
what happens during the fasting time? What we are doing this intermittent fasting time. So what is happening when we are not eating for long 16 hours in our body? Okay, it actually very just like saying just keywords like it improves our metabolism and it enhances our fat burning very easy. And also it supports the insulin. How? I will tell later. It supports the insulin so that it is helpful in the diabetic. And we are very much, so that it supports the we so that we it's repair the cellular activity. And also the longevity will help to not to take we are actually before we are taking lot of foods, snacks, and whatever we used to, for example, if you get hungry, like what you used to do, we are just going and take any foods. We're taking any number of foods very without knowingly what actually it content is there inside. Example, we can say like biscuit, breads, and there are many things we are eating, right? Other than you know what is actually inside the food, what you are taking daily. If you are little bit conscious about it, we won't even touch, because when we touch, what is happening? If you are taking the food as like before, like not coming into the intermittent fasting, if you take the food before, all the foods we are taking, the carbohydrate is very, very, very big culprit, which makes many diseases come inside. It's giving, we are just giving the door open, and more the diseases come inside. Why? Because the carbohydrates is the one which gives us the energy. It's making is it's actually become like a glucose and stored in the liver. For example, what we are doing, we are taking in it's like it's not a limited. We are taking unlimited time of food, like morning, evening, night, even get up at 11 o'clock, 10 o'clock. We are going to supper. So whatever we feel to, we are just putting, but we are not giving the time to work. For example, if your child, what will do? Will always play, work, run. If you say to your child, he will not walk slowly. He will always will run. So they always take whatever they will take very limited food sometimes. It actually sucks. So the body takes all the glucose, whatever it takes into the liver and muscle. First two places where the glucose store. The glucose is storing in the two places. One is the liver, one is the muscles. We have muscles, no more or less in our body. So that only if you are getting very easily become very fat, oh obese, I couldn't walk, all the problems comes. So what we have to do? We have to make all the fat which has already accumulated in the liver and the muscles. How to burn it? Is it a very easy way? And it is actually, before we thought, there are many number of exercises, many number of things we have made, even fasting also. We don't know how to fast actually. We will fast for one day, next day we take all the things, it's also spoil. Fasting means there is a particular thing where actually the insulin in our body, usually the physiologically, the insulin will start production in the morning 8 o'clock, and it goes up and spikes towards the noon, and then it reduces at the 8 o'clock night. But what we are doing at the time, we are taking all number of foods, any number of foods, no? And it's not actually, even in the night time, whatever you are taking, and the things which you are taking, the carbohydrates, the foods, rice, we are taking, if you want to more, more we appetite, we take more the foods. We are not seeing whether it has protein more, it has minerals, or this has this one or that one. Although here we are not going to go and check the each and every diet, it has any other minerals or not. We are going to give some exact things what we can take, in which all the minerals and vitamins and very much enough amount of protein which is already there. We are going to give you such a precise way that the 4 cups of foods, what should be 4 cups, what should be in that 4 foods, 4 cups, and how to take it, what is going to help, how it's going to help us. ओके अभी हम लोग ना जो जैसा खाना खाते जा रहे थे इतने साल, क्या हो रहा था, एक बच्चे को खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ही अपने को एनर्जी आता है, जो ये एनर्जी जो है वो ग्लूकोज जाके लिवर में जाता है और अपने मसल्स में जाता है, ठीक है, जाना चाहिए। अगर वो जो जरूरत से ज्यादा अगर ले लिया, जैसे जब बच्चे थे हम लोग पूरी तरह खेलते थे, करते थे, ये काम करते थे, बहुत सारा वो एनर्जी कंज्यूम होता था, तो इसलिए वो अपना फैट जमा नहीं होता था। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, पहले फैट कहाँ जमा होता है, लिवर पे जमा होता है, लिवर पे पहले जमा होता है, उसके बाद बॉडी में हर जगह जमा होता है।
तो रिवर्स भी ऐसे ही करना है। रिवर्स कैसे करना है? पहले फैट लिवर से निकाले, फिर बाद में बॉडी से निकलना लगे। वो कैसा है? दो तरीका है, दो दो चीज करने वाले हम। एक, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो फास्टिंग भी पहले कैसे करते थे फास्टिंग, हम लोग पूरा दिन नहीं खाना खाते थे, अगले दिन पूरा बहुत ज्यादा खा लेते, ऐसा नहीं चले। अभी क्या है, फास्टिंग में क्या होगा, 8 घंटा खाना खाएंगे, 16 घंटा हम लोग फास्टिंग करेंगे। ओके, उससे क्या होगा, पहले अपना वजन कम होगा, दूसरा अपने का पौष्टिक आहार जो खाने जितना जरूरी है उतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा एक्चुअली खाना खाएंगे खाएंगे और अपना इंसुलिन लेवल हर वक्त लोअर स्पाइक नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट जब खाते तभी तो स्पाइक होता है, बट जो भी खाना खा रहे उससे इंसुलिन लेवल बहुत ही लो लेवल पे रहेगा। और आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, पहला देखिए 1-2 हफ्ता आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि अरे मेरे को थोड़ा खाने का मन कर रहा है, बट 2 हफ्ते के बाद आपको बहुत एनर्जेटिक रहेगा, यानी मेटाबॉलिज्म आपका सेट हो जाएगा, आपके एक्चुअल टेस्ट बड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले वेट लॉस होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा हो जाएगा आपका। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन यानी जो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है वो कम हो जाएगा आपका। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होगा। ओके, ओके। Yes, ma'am. Actually, this is what other important features it will happen if you are in the fasting, this intermittent fasting. Actually, intermittent fasting, 10% it helps us becoming weight loss. First, it helps you become, the whatever the that carbohydrates which stored, in the as a glycogen in the liver, if it is very high, it's very difficult. That's why the insulin issues or insulin resistance comes. So the problem starts. I mean, so because why? Because we are not in such a active like a children's. When we are not such active like a children's, what happened then? So already it's stored. It's already storing. Again, we are taking more carbohydrates, and again it becomes more glucose. Again it starts. So it becomes we are giving more loading inside our liver and all the muscles. That's why we are getting a lot of issues. What happens during the fasting time? In the metabolic and health benefits are little bit, we can just say the weight loss is definitely very much, very much. You can say if you do 100 days, you see 100 days, it should be very much strict and regular. We should not even take whatever before we started like that we are taking like these foods. That should always be, everything will be managed. When you are taking, automatically we never allow. I can say one example. Recently, one patient, one person who came with a diabetic and these issues, when he started giving the medicine, when we started giving this intercurrent fasting method, his levels actually we thought to for it's like a weight loss or something other issues also, but we started it. There are internal essence changed, also their level of diabetic also changed automatically. We didn't give that much importance to that one, this one, but when they started, what happens immediately, it's before it was 3 something 300 something, but after what happened, it's reduced very very nicely, like 180 200 like that. So how it has happened within 3 days 1 week? Because whatever they did wrong through the foods has been reduced. So that itself giving such a, I just giving the example. And then I'll the give same. I'll speak it up. Yeah. So ये भूलने से पहले भैया ने बोला अभी रिसेंटली एक एग्जांपल, बहुत सारे हैं बट ये एग्जांपल बता रहे हैं। अभी स्टार्ट किया उन्होंने, 2-3 हफ्ते हुए, और उनका ये पहले अभी जब वो इंसुलिन लेते थे, उनका हर वक्त उनका शुगर हर वक्त 350 370 वैसे ही ऊपर ही था हर वक्त। अभी उन्होंने जैसे ही डाइट स्टार्ट किया 1 हफ्ते में उनका इंसुलिन लेवल्स, उनके शुगर लेवल्स 170 170 150 वो रेंज में आ गए 1 हफ्ते में। ये क्या बदलाव है? सिर्फ खाना, सिर्फ डाइट बदल के। अभी तक हमने डाइट पे कभी ठीक से काम नहीं किया, अभी डाइट बदल के ही उनको इतना बदलाव आया। कंटिन्यू। Yes, today also he came. He came just. He said, "I am not getting. I thought that I will get very much, appetite, more appetite than how I felt. I just fear of that very first day. But he said now I'm not getting such type of issues. Now even I can sleep better. He's saying I can sleep better. I can even he didn't take anything for constipation or like that. But he took like this.
But now he's saying that even the constipation relieved. So he's the because what we are giving in which the fiber food is very clear. So what happened regularly? He's saying I'm not eating any constipation issue at all. He's very fine, and many things mentally also he's very feel better and very much fresh, even refreshed feel before. अभी वो बोल रहे हैं, हाँ अभी वो बोल रहे हैं कि मेरे को पहले कॉन्स्टिपेशन भी होता था, अभी तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है। और दूसरा मैंने सोचा इतना 8 घंटे में ही 2 बार खाना खाना है, तो मैं सोचा कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मेरे को कमजोरी तो है ही नहीं, मैं तो बहुत एक्टिव लग रहा हूँ मैं, और ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा बहुत तंदुरुस्त तंदुरुस्त लग रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। That's how the fasting actually we starting with the obesity problem. Okay, along with we are seeing the fatty. It's not like like a doctor. We're just seeing like a nutritionist. Okay, yes, we are taking these diets for controlling these things. So increasing the metabolic activities by itself when you follow very strictly this one. Okay, one thing. Second thing, actually the health benefits will be very high. Even what do you think? It will be more than that. Okay, and also the thing is because of that weight loss we start, and along with that, even the people those who come along with the fatty liver with the same format of intermittent fasting helps them. And we are saying, oh, how it is reduced? I don't know where, because the fatty liver, because it's formed because of this, so it's actually metabolized. No, it is metabolic activities increase, automatically it decrease. So again, we are getting the liver getting better into the very normal state. So again, they will be active. Even that Bhaiya told that he's saying that he is very active now. How it is possible? Even we're doing many things, many tablets we are taking. Is it giving such a statements? We don't know that much is possible. We don't know. You have to say, because you are all actually having some issues. That's why you are here. So you understand. No, but lot of many years you are taking medicine. Many years or few months or many months you are taking. What is the results happening in self first? Is it actually reducing? The Bhaiya, what I'm saying, he took 3 to 4 tablets for the even some problems. But even though it is not happened for many years, but it is happened automatically when taking the intermittent fast. Continue. So here I can say the summary of the key effects which helps us. Okay. So when we are doing this intermittent fasting, what are the effects? Actually, is lower the insulin. So you have to think, because it is now we are not giving medicines. Be just conscious about it. We are not giving any medicines. Okay, we are giving only. We are just guiding, just supporting as a brother and sister. We are just going to support you. If you start, what happens? Because why we are coming into this? The program we start because we have such a benefits with many peoples, and then increased as there are some autophagy. These are little medical terms which helps in helps us in cellular activities, okay, to enhance the inflammation and all. Also lipid profile, it improves the lipid profile. These are all happening by itself when you start this weight loss procedure through this intermittent fasting. Also the mechanism means what? It promotes the fat burning and reduces the risk of any diabetic or even fatty liver risk. Even more obesity, the problem will be high, no? That also will reduce by itself. So it supports the fat loss. This is the main thing. Also, fat loss is decreased and the muscle maintenance will be very high. The muscle maintenance will be high because we are taking enough amount of protein regularly and cellular repair. That's why they feel very refreshed. That's why that even the old age, that's why the old age aging symptoms also reducing. Also, it reduces the cholesterol, it helps and lower the diseases. That is why we put it at very beginning. It's a illness reverse program. The illness means any illness can be reduced because using this type of intermittent diet. Before that, we have to go to the first slide. Now we just jump into the exact main picture. Shall we start? Are you ready? So we all know that 16 hours should be fasting. Like how, like we have to choose the time according to your lifestyle. You have to choose the time. After you go to job or something, you have to. But 8 hours should be eat and eat to 2 meals only.
very much carefully. We should be planned yourself and be disciplined. Discipline in sense, we have to stick to the strictly to the fasting and eating items at times. Items also at times. What are the things we should take? I told the 4 bowls of the balanced plate. The one bowl, it is very important. Bhaiya also will translate this each and every line. So the first bowl should always contain the protein. What are the proteins? Because it is very difficult. No, if we are not aware of it. So what are the foods we can take the protein? Where is the protein? We don't know. But at least here we should understand there are few proteins we can understand. One is the egg, and then chicken, and then there is a hand curd. Curd. The curd which we have to hold it in a cloth and be for another 1 hour, 2-3 hours. You can get some like a paneer also one of the protein. So which we can take, these are the protein which helps us in one bowl. Okay. And Bhaiya, can you? ठीक है, अभी खाने के बारे में आते हैं। तो पहला खाना या दूसरा खाना, दोनों खानों में 4 बाउल होना चाहिए, 4 कटोरी। ठीक है, एक कटोरी, पहला कटोरी में प्रोटीन है, ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन में क्या होना चाहिए? एग, अंडे हो सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो अंडे हो सकते हैं, या एग्जांपल यहाँ दिखा रहे थे, अंडे हो सकते हैं, या चिकन हो सकता है जैसे उसके नीचे डायग्राम में, या फिश हो सकता है एक, और टोफू हो सकता है, और पनीर हो सकता है। यहाँ जैसे दूसरा प्लेट में दिखा रहे पनीर है, दूसरा प्लेट में है पनीर, और पहला प्लेट में है हंग कर्ड, यानी दही को जैसे पनीर जैसा बनाते हैं ना, दही को अगर हमने एक कपड़े में बांध के रखा, 3-4 घंटे रखा ना, तो वो पूरा पानी निकल जाएगा। दही का पानी पूरा जब निकल जाएगा ना, उसे बोलते हैं हंग कर्ड, यानी ग्रीक योगर्ट बोलते हैं। वो भी एक पहला जो फोटोग्राफ है, यहाँ पहला फोटोग्राफ में जो दिख रहा है ना, पहला वाला भैया, हाँ पहला वाला दिख रहा है, वो हंग कर्ड है। ठीक है, वो पहला बाउल वो होना चाहिए। हाँ, पहला बाउल वो होना चाहिए प्रोटीन का। अभी दूसरा बाउल पे आते हैं, आगे बढ़िए भैया। दूसरा बाउल में नट्स है, यानी सेकंड बाउल वी हैव नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, और फेनुग्रीक सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब आप हेल्दी फैट्स है, ये सब हेल्दी फैट्स है। नट्स, थोड़ा सा छोटा सा बाउल, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा बाउल नट्स चाहिए। और तीसरा, हाँ आगे बढ़िए भैया, बोलिए, कंटिन्यू। So the second bowl, Bhaiya told that, the second bowl should contain the nuts. All nuts has all the minerals. We won't be regularly, actually we are not regularly, daily, we are not taking the nuts in our life. So you see all nuts, walnuts, and other healthy fats and minerals, everything is there. Any nuts you can take. Flax, also the seeds which can be taken here, flax seeds. Many number of seeds we have, so you can use it. So these will help in the second bowl. You see the second bowl, you see in all the plates, there is one part of, protein is there. Here, first plate, we have the protein as such a hanker, okay, that is grease curd. And then the second plate, there is a paneer. Third plate, egg is there, okay, and fourth plate, and here also there is chicken is there. And here, fish is there, fifth plate. See, like this. So each and every one part of this plate, everything should have, in one part of your food plate should have protein. Please don't miss it anytime. Please don't miss the protein at all. Okay. Second, you see the nuts. In every plate, there is one part is the nuts. That is 1 cup of nuts is there. Whatever the nuts is there, please use of it. Okay, nuts. Right? You got the nuts. And another third plate, you see this. Third bowl, the third bowl, we should have the vegetables. It is true, you must see when we are checking the vegetables, we should have more fiber, vitamins, minerals. In everything, all things will be high. If you check, it helps you a lot. That's why I'm saying. So if you're saying we can take the vegetables, and fully with the vegetable, you can also, not is like a dry, very raw vegetables. You can also cook. You see how we are. It's not like that we should not use the oil and all. You can use as you doing for others, like, in our day-to-day life, we are making some subjis. So like that, we have to use the vegetables. You see, in all plates, we have the vegetables as a sabji, sabji is there.
everything. This third plate also very important, should contain greeny leafy vegetables or plus vegetables or sabji. Okay, we have to make 2 bowls, not 1 bowl. 2 bowls of vegetables always better to, when you are taking 16 hours of fasting, no? So all these vitamins, these proteins, all the cups actually, which minerals, whatever there is, completely filled with the balanced nutrition. If you take, what happens, it will actually work its own way. Even though we don't know the science also, don't worry about it. But within 2 days or 3 days, we will feel such a good relax in our mind first. Then totally slowly we can feel something is good happening. After through 2 weeks, lot of changes. Why I'm saying is, many patients with or many people with who are started with this intercurrent, intermittent fasting, the people's giving such a wonderful state. Okay, and it should be, only thing is, 2 3 things, we should not use carbohydrates at all. Please, very much aware. You have to beware of it. You should not use carbohydrate foods at all. That's why this intermittent fasting we saying no carb foods. Okay. Jai Shri Mataji, hello all. So you will notice the first ball is protein. पहला बॉल प्रोटीन है, अब छोटा सा बॉल अपना नट्स है ना, और तीसरा बॉल एक सब्जी, एक वेजिटेबल सब्जी, और 14 बॉल सैलड, यानी खीरा, कैरेट, आपका ये सैलड चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाना जो शुरू करना है हर वक्त आप सैलड से शुरू करिए या वेजिटेबल से शुरू करिए, क्योंकि फाइबर पहले जाना चाहिए बॉडी में फाइबर पहले जाना चाहिए। इसलिए आप अपना खीरा, कैरेट, जो भी आपका सैलड है वो सैलड से शुरू करिए। उसके बाद वेजिटेबल लीजिए और फिर बाद में नट्स लीजिए या प्रोटीन लीजिए। ऐसा पहले आप वेजिटेबल से शुरू करिए पहले या सैलड से शुरू करिए, है ना, ठीक है। ये 4 याद है ना, एक सैलड हो गया, एक सब्जी हो गई, फिर बाद में एक छोटा सा नट्स हो गया और 14 प्रोटीन, ठीक है। ओके, 4 ये 4 होना चाहिए प्लेट में, सुबह का प्लेट में और शाम का प्लेट में, दोनों प्लेट। Fourth bowl is salad. The fruit, it should not be a fruit. Please, very cautious. We should not use fruits. Why? Because fruit has more glucose. Because salad means usually the people still think of fruit. फ्रूट भी फ्रुक्टोज होता है, वो भी आपको फिर बाद में जो कार्बोहाइड्रेट से प्रॉब्लम आता है वही प्रॉब्लम इसको भी आता है। तो 100 दिन के लिए आप रोक के रखिए, ओनली फॉर 100 100 दिन के लिए रोक के रखिए। So when we think that there is no nutrition in it, don't think like that. But nutrition is there. But what is there? No, but carbohydrates also there. So that spoil us. Glucose, fructose is there. So we should not take for 100, only 100 days. But you will get all the things which our need for the body. It is not for your brain. Don't, the brain will ask this one, oh, noodles. Okay, I like noodles. Why? Okay, today only please. My mind asks, oh, I want these noodles today, fried rice. Okay, I want this one, that one. Please, this is very much, I'm humbly asking you, please. Yes, ये भैया हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ये आप थोड़ा संभाल के करिए, और ये आप जब जैसा आप अवॉइड करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपको वो अपने शरीर के बारे में, अपने लिवर के बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी आपको आएगा। जब तक आप ये खाना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये हम लोग जो खाना खा रहे हैं, पैकेट का खाना, ये खरीद के या कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं ना, उससे कितना नुकसान हो रहा है। ये जब तक ये खाना नहीं शुरू करोगे आपको पता नहीं चलेगा। 1-2 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि वाह, ये इतना कैसा बदलाव आ रहा है, अभी तक मैं क्या खा रहा था, आपको ये पता चलेगा। So we can think one more thing. Here we are 150 people are here. Okay. If these 156 people practice, what happenings we see is actually that's such a benefit. What happened? These 156 people already we are in some diseases, right? And it's going to be better from that first. Okay. And we can see what happened actually after 100 days. Many things, many folds, we are better from that. Even no need of, we can say that if this is 157 people, we can say if it is 157 million people follow this, what happened? In India, for example, in India,
The whole people is starting, oh, everyone is started like this. What happened? What will happen in this India then? Actually, we won't go for the hospital at all easily. Very rarely, whatever the injury or something. Probably you are saving your money first by itself. Like happen. So this just our decision, our vision is just we should not always be in the diseases, always going into that part. Yes, we are going to use this. For example, if you use the helmet, we won't get, if you injured happen, actually we have saved this area. So we can live. If you are not using it, they will die. Same thing. If you use this food, it's like a protection. Protection from what? From the diseases. If you use this, you are preventing many diseases. Okay. So if you start this whole, nobody will be, the disease will completely, slowly reduce a lot. स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता सब। पहले तो वजन कम होगा, आपको पता चल जाएगा, आपका लिवर बहुत अच्छा हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका चित्त भटकेगा नहीं, योर अटेंशन विल बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज योर लिवर विल बिकम वेरी स्ट्रांग. भैया विल हैव टू मूव लिटिल बिट फास्ट. Yeah. You see, this is actually the thing which we have to be very, that's why we take a lot of time for this part. So these things, because many questions will come, oh, if you have any doubt, please check that in the Google or something, it has carbohydrate or not. If it has at least few 2%, 5%, please stop that. Because we don't want carbohydrate. This is no carbohydrates diet. Please, this is only thing I want to give the essential is no carb diet. और ये हम लोग 100 दिन के लिए कर रहे हैं, आगे नहीं कर रहे. ठीक है, 100 दिन के लिए करना है, आपको वेट कम करना है, क्योंकि डिसीज है, बीमारी है, बीमारी खत्म करने के लिए आपको 100 दिन करना है. ठीक है. We can use like, for cooking, you can use it like oil, very minimal oil, and like olive oil or something, any oil, but you use minimal and you can enjoy it. And what we should not eat, already we told, we should not take the fruits. We should not take the fruits, okay? And you should not take, because that we fruit, feel that milk, sugar. Fruits, milk, sugar. Milk and its products. Milk and its products. कोई fruits नहीं, अभी fruits नहीं, 100 दिन के लिए नहीं. ठीक है. Only 100 days. Normal. Yeah, no more fruits and no more. Only for weight. हाँ, ये प्रोग्राम के लिए. ठीक है. Only for. उसके बाद तो नॉर्मल खा सकते हो. आपका जब आपका लिवर ठीक हो गया, आपका वजन कम हो गया, आपके जो डिसीज थे यानी डायबिटीज जैसा डिसीज वो कम हो गया, उसके बाद आपको पता चल जाएगा. पहले तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी कैसा काम कर रहा है, और तब आप आहिस्ता आहिस्ता एक आप अपना डाइट में इंक्लूड करते जाइए. नो प्रॉब्लम. If you want result better, we have to be. And then milk and products, what Bhaiya told us, we should not touch. Milk and its products in any way, dairy products. And the thing, we are already taking this high protein, fats and fiber, already we are focused on. And foods to avoid is no carb. That is main picture. Whatever we take the food, we have to first check whether from pre-week eat, any carbohydrate is there or not, first week. And check where, okay, anywhere if you get any fruits, please stop. And say, okay. अगर आपको डाउट आ रहा है ना इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, आप गूगल पे डाल के देख लीजिए, या आपका मेटा पे डाल के देख लीजिए कि डाल सकते कि नहीं. कॉटेज चीज इज पनीर इज गुड. ठीक है, ऐसा. And one more very important. For example, if you get hungry in other times, like 8 years, 8 to 6 something, in between if you are getting angry, actually sometimes we are not aware whether we are angry with the food or the thirst. Is it thirsty hungry or food hungry? So whatever it is, but we have to take 3 to 4 liters of water per day. We have to be completely hydration. Please remember, we have to take at least above 3 liters of water. Don't forget, if you get any little bit hungry, please take the water and drink. It will be completely finished. Because let that fasting time to work in us, so that metabolism works. दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है. Milk products as they are, like जैसे दूध है, दूध नहीं है, हंकर्ड लेंगे, हंकर्ड और पनीर लेंगे. दूध के प्रोडक्ट्स हंकर्ड और पनीर लेंगे, बट दूध नहीं. Okay? Yes. Okay, so you got it. This is another very much key point. Please take more water. That means 3 to 4 liters.
not much more, right? So hydration is very very important for this. Right. कोई पूछ रहा है कि राजमा ले सकते हैं क्या, ये चना ले सकते हैं क्या? नहीं, आपको राजमा चना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, आप डाल के देख लीजिए इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट है उसमें, वो मत खाइए, ठीक है? only for 100 days. Only for 100 days. We have to think only for 100 days. Yes. ये 100 दिन की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ताकि वो बीमारी से कम आए, बाहर निकले। And what we can take just before the food, pre-meals, like you can take when we get up after, can take little bit cinnamon with hot water, can drink. Okay, cinnamon, cumin, coriander, turmeric, like that we can use in even in the salad. And this we have to please use this little bit more, which also help more. Other things which can be included is these are the things: cinnamon, cumin, turmeric, and coriander. हाँ, कोई क्वेश्चन आया था माइग्रेन के टाइम में खाना बिना खाना खाए नहीं रह सकते। तो माइग्रेन के टाइम ना आप पानी पी सकते हो, आप उसमें आप नीम या नींबू मिला के पानी पी सकते हो। ये सब पानी पी के देखिए, ठीक है? पानी की जरूरत है बॉडी को, खाना की जरूरत नहीं है। एक आप पानी के बिना एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, खाने के बिना 2 दिन 3 दिन भी रह सकते हैं। तो पानी जरूर पीजिए, ठीक है? इसलिए आप जरूर, ठीक है। Actually, 85% of people with migraine or headache is because of dehydration. Please remember it. That is माइग्रेन ज्यादा से ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से होता है 85% लोगों में। More you drink water, slowly the pain will never come in future. So okay, अभी बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ अभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे आ गए हम लोग। अभी ये इसमें डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन कैसा मेंटेन होगा, उसके लिए वो कैसा मेंटेन होगा अभी भैया बात करेंगे। Yeah. Actually, what is the discipline in this group? Actually, there are more than 500 people here and 162 are joined here. But what we have to do means daily meal photos. Please, 2 meals we are taking daily. 2 meals. Morning time and time you have to put what is the time you taken the morning meal. And first meal, which time you are taking. Okay. And then second meal, which time you are taking. You have to take the photo. Take the snap, take the photo and write it down. Please send in the group. It is very, very, very 100% important. Must. It is very strict also. We have to be. Please sure that we have to put the daily meal photos. And you can share into the group. First, don't miss. And every time, somebody should tell. Nobody is there to tell you, please do it. Because more 500 people are there here. So please put the photos when you eat morning and evening with if possible. हाँ, ग्रुप में मैंने एग्जांपल डाला, देखिए कैसा लिखना है। डे 25 मील 1, ऐसा जैसा खाना खाने से पहले आपको फोटो लेके ऐसा ग्रुप में डालना है, ठीक है? Actually, you've seen some photographs here. No, we have shown this is actually, these are the foods that people, those who are taking the intermittent fasting, they send in the group. That is why what we are sending again to you. So please make these photographs and send it to the group. No one should miss it any day. Any meals also should never miss. Okay. And one more and then weekly weight tracking. We have to please, if you have a weight machine with you, please take daily also at same time. How your weight progress, you have to monitor it regularly. Okay. And that is very important. The second point also very important. Weekly once we have to check the weight tracking. Okay. Second, पहला पॉइंट तो हम अपने जैसे 9 बजे खाना खा रहे हैं या 8 बजे खा रहे हैं या 10 बजे खा रहे हैं, जब भी खा रहे हैं, वो अपना प्लेट का फोटो लेना है और वो फोटो डालना है, ठीक है? और ये सुबह हो गया, शाम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें डिसिप्लिन कैसा मेंटेन करेंगे? जब पहला वीक अपना वेट चेक किया, पहला दिन जब हमने स्टार्ट किया, मेरा वेट है सपोज 80 किलो, ठीक है? तो एक हफ्ते बाद मेरा प्लीज टेक दैट स्क्रीनशॉट। हाँ, उसका फोटो लेना है, वेट का फोटो लेना है और वो वेट डालना है मंडे। And please take the screenshot if you can miss in your future. Please take the screenshot. This one, discipline. This is very, very, very important. Yeah, we will give the slides in the group. Okay. Then group motivation. While you are sending this, if someone is, for example, per day, second day you have very good changes.
Okay, whatever the changes you get, that also you can share in the group, because that will help others, those who are not yet start the intermittent fasting. अभी क्या होता है, ये ग्रुप में जब पोस्ट करते जाएंगे ना, तो अपना मोटिवेशन बढ़ता है। अरे ये लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, ये भी, तब अपना बड़ा अपने को बहुत उत्साह मिलेगा और हम भी करने लगेंगे। नहीं तो क्या, अकेला करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ग्रुप में करते रहेंगे तो बहुत जल्दी अपने को मोटिवेशन मिलता है। Yeah, this group motivation definitely for us already started, but those who are not yet start in the group can, they can get some time to get, so that will help them also to get into that. So if you feel, for example, 2-3 days, wow, it's really wonderful, what actually before I thought, now what is happening, you see, have we given the example because of that only. So the changes, so weekly Zoom call will be there. We can have some clarification about the doubts, and we can share the हर progress. संडे, हर हर हफ्ते एक बार, मेरे ख्याल से संडे होगा, संडे हम लोग ऐसे कॉल में आएंगे और हम लोग कोई डाउट्स होगा, प्रोग्रेस बात करना है, वो सब बात करेंगे। Right, and this is the very important, we have to be very disciplined in this. These 4 important things we have to think. And pre-meal is very important, please, because more we take, little more protein you can take. Sometimes it may be less in the food. If for example you have no chicken, or you are very less, if you are not taking, we have to gather everything, but we are just taking pre-meal protein. You have to take 10 minutes or 10 minutes before, please take protein in the water, not in the milk, in the water. Just put the powder form of the protein, put in that water, in the hot water, and please drink it. 2 spoons of protein in a 1 glass of water. Bhaiya, you are unmute, please. या सॉरी, थैंक यू। सो खाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप 10 मिनट पहले थोड़ा गर्म पानी में एक पूरा ग्लास का 1 या 2 स्पून, आपके वजन के हिसाब से, आपका वजन अगर 80 से ज्यादा है तो 2 स्पून लीजिए, 80 से कम है तो 1 स्पून ले सकते हो। प्रोटीन पाउडर मिला के आप पीजिए, ओके, खाने से 10 मिनट पहले। इससे जब जिसको वजन कम होना है ना, उनको खाने से पहले खाना प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है। जिनको वजन बढ़ाना है वो खाने के बाद लेते। तो हम लोग वजन के कम करने का वो लोग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, example, if you have more constipated very long months and years, and you also can take the pre-meal fiber spoon of powder also, you can try, but it will be fine when you take that fiber already in the vegetables and leafy green vegetables. वैसे किसको कॉन्स्टिपेशन है, पेट में गड़बड़ है और बहुत दिनों से चल रहा है, तो उनको फाइबर लेना भी अच्छा है खाने से 15 मिनट पहले, ठीक है। अगर नहीं तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो अपना जो सब्जी खा रहे हैं और अपना जो सैलड खा रहे हैं उसमें फाइबर से भी काम चल जाएगा। Okay, this actually we told already, I think so, this improvement, weight loss and actually we know that even this fasting will help the brain also. They will be very much cognitive, cognitive functions. Before they may be very lethargic, very tired. The liver, fatty liver and obesity people always will be very tired, maximum 90%. They will be tired. Whatever they do, then I will sit. I want to sit. They want to cook, even Didi, somebody, I go and cook means, oh, I just go for 5 minutes standing. Oh, I couldn't. Please wait, I will sit. Because I'm just grooming or something. Again, we will be tired. This tiredness is nothing but the symptom of fatty liver and obesity. So please aware, if you intermittent fasting, after 2 weeks, completely this will be go off. You can see that such a good changes if you very much strict into this intermittent fasting. Yes, भैया. So it's actually finished. हाँ, ये फैटी लिवर का, हाँ, हो गया भैया। I think we're done. We can open up for questions and then people can start talking about it. Yeah. Anything is and one more. I just read the last slide. It will help. You see the conclusion. Intermittent fasting supports weight management and metabolic health. You see, this is what very important. Metabolic health. That is why we put illness. Metabolic means many diseases which we have in this world now. It is metabolic disorders.
So all the diseases are metabolic disorders. Why? Because we are not taking in a proper way of the foods. And this will work. The fasting, intermittent fasting will completely help you to support you to come out of this. Okay. And just for 100 days, just for 100 days. And it works via hormonal shift, metabolic shifting, and cellular repairing. More long-term studies are needed here, but current evidence is very much promising for you. Thank you very much, all my dear brothers and sisters, for these patients. Also, please sorry that before we have little late because of some technical issues. Thank you very much, really, so much. Thank you, all of you. And this is all the great God's grace that we are all united here. It's really wonderful. So let the enjoy this real cure. You know, this is actually a very big good lifestyle. It's just we are enjoying the lifestyle changes within us. Thank you, all of you. Thank you very much, all of you. Also, I thank to the God. These are all happens which help us because of the link. We don't know each other. Probably we don't know each other. But the love we are loving, we should. So we all. I opened up for everyone. Yes. Not only the weight, and we have to be little bit with the tracking of this test also. Very good. Then support network. Engage with the group motivation always. We have to support each other. We how we supported with each other. That's by grace, you know, the divine, the God. So let's see that. Celebrate the progress within 100 days. Please enjoy this 100 days. This is actually enjoyment. This is not a very struggle period. It's very joyful period because when I also started, you know, I'm very happy. Even for example, someone is eating, I'm not getting, you know, tempt. The temptation is not at all there for me. So whatever you have tempt before, I can say one example. जय श्री माता जी भैया भैया डिनर का बता दीजिए डिनर में क्या ले सकते हैं हम सेम आप भैया कैन यू मूव टू द स्लाइड वेयर वी हैव फूड इमेजेस Which one भैया थाली plates okay and one more thing I want to say here Jai Shri Mataji, actually here there are many Sai Yogis are there here. Please, this Sai Yoga is not at all included. It is not included with the Sai Yoga. It's completely out of this. So it's common for everyone. It's not only for Sai Yoga. ये Sai Yoga के लिए नहीं है, सबके लिए है ये. Yeah, and also we are not going to give any techniques from the Sai Yoga here. I'm very sorry about it also. But here only we are just going with the diet management with the obesity starts with. Yes, ma'am. Yeah. Can you go back to that? Yeah, go back. Yes. Keep this one here because many people will ask questions only on this. Yeah. Okay, सुबह आप हाँ बोलिए. जय श्री माता जी भैया which one प्रोटीन पाउडर कौन सा लेना चाहिए? फिलहाल आपको जो मिलेगा वो प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. या घर में कैसा बनाना है एक वीडियो भैया डाल देंगे कैसा बनाना है, ठीक है भैया. मेरे को प्रोटीन डाइटिक्स नहीं होता. ग्रीन टी ले सकते हैं भैया ग्रीन टी भी ले सकते हैं क्या? हाँ, ग्रीन टी आपका खाने का विंडो में ले सकते हो. यस, बिना दूध बिना शक्कर. भैया इसमें हम दलिया और ओट्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं दलिया और ओट्स नहीं. आप अब लिख के देखिए ना, गूगल में लिख के देखिए इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट है. हाँ, तो मतलब ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग का मील और नाइट का मील यही वाला लेना है हमें. बस यही करेक्ट. भैया थायराइड वाली होगी जय श्री माता जी भैया. हाँ बोलिए जय श्री माता, बोलिए भैया. जैसे नॉन वेज नहीं खाती हूँ मैं, तो फिर उसके लिए क्या सिर्फ पनीर और पनीर, टोफू, हंकर्ड, दही का. अच्छा राइट. प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए प्रोटीन के लिए? पेट में एकदम खाली आ जाती है, टाइट हो जाता है. आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलिए. हाँ भैया, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है. एक भी खा लेता हूँ तो एकदम स्टोमक मतलब फटने को करता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, चल नहीं पाता हूँ. आपका वेट कितना है? 75. आपका वेट ज्यादा है? नहीं. हाँ, तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है वेट लॉस प्रोग्राम. नहीं, मेरे को मस्कुलर इशू है, इसलिए मैं प्रोटीन नहीं लेता हूँ तो थोड़ा बॉडी में फील लाइट होता है, तो थोड़ा चल फिर पाता हूँ. बीन बोल रहा हूँ. नहीं पॉइंट ये वेट लॉस प्रोग्राम के लिए है, जिनका वेट कम करना है उसके लिए है ये. अच्छा ऐसा है. हाँ भैया जय श्री माता जी. थायराइड में क्या करना होगा थायराइड वालों को? क्योंकि
हाँ प्रोटीन। आपका वेट ज्यादा है। हाँ भैया, वेट हाँ वेट, ज्यादा है थायराइड में भी वही सेम प्रॉब्लम्स है। आपका फैटी लिवर होगा। आपको थायराइड आने से पहले ही फैटी लिवर हो गया होगा। जी। अगर आप 10% भी वेट कम कर लिया आपने, तो आपका थायराइड घटने का चांस बहुत ज्यादा है। भैया तो इसमें कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी, क्योंकि डॉक्टर तो वैसे ब्लैक कॉफी प्रोटीन लेने से मना करते हैं, कर्ड वगैरह लेने से मना करते हैं, तो फिर थायराइड वालों की डोंट, क्या डील नहीं होगी? ले सकते हो, गारंटी, मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी 100 दिन में आपका थायराइड विल बी गॉन। जी भैया, थैंक यू भैया। जय श्री माता जी भैया। Yes, Okay, when you start the day, if you take water with pinch of salt, is that yeah, considered fasting? it will not break fasting, no problem. So can still okay. Number Right. two, so we cannot take potatoes, any sweet potato, all that. No. No. Beet- Whatever you have doubt, you just go to Google and type it. How much carbohydrates does it have? If it has carbohydrates, don't take it. beetroot. आप डाल के देखो. You write it there. You write it on Google. See. Okay, and then thirdly, how about juice like celery No. juice? No. I mean, if it is a green leafy vegetables, yes, you can take. Okay, so you take with the meal when you're taking, correct? Yes. Okay, thank you, Bhaiya. भैया जय श्री माता जी भैया। हाँ जयश्वंत बोलिए. Can a feeding mother do this intermittent fasting, भैया? Why do you need to? Do you want to lose weight? Yes, I want to lose weight actually. After delivery, I But- got again so much of weight, and Yeah, doctor suggested to lose at least 8 kgs. But I'm do a one feeding thing. mother. My baby is 11 Yeah. months. Yes, Bhaiya. That will help definitely. It will help the pregnancy also. Even during the pregnancy, after the delivery also, it will actually help you. And the things are very important. Whatever we said, this must be there in the food. But then, the baby will get enough good milk. It will get, it will get very nicely. Also, we won't get any problem with the milking or anything like. Okay. Thank you, भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जयश्वंत बोलिए. ये जो 4 बाउल्स बताया ना आपने विटामिन का फाइबर का, क्या हमने क्या आपका आवाज चपाती नहीं आ में रहा क्या लेना है? चपाती कौन सा रोटी लेना है? नहीं, चपाती नहीं है इसमें चपाती नहीं है. खाना ही नहीं है। नहीं खाना है. आप अगर वेट कम अच्छा। करना है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना. चपाती रोटी से आपका गेहूं से बनता है ना, गेहूं का, चावल का. हाँ, अगर Let वेट him कम to करना see है this plate, Bhaiya. आपका Let him to see हाँ? the plate. Is there any ये प्लेट दिख रहा है आपको? chapati प्लेट दिख रहा है? Is there any rice and chapati? वेट 105 है। हाँ, तो वेट कम करना कि नहीं? हाँ, वेट कम करना है ना। हाँ, तो वेट कम करना है तो 100 दिन का अगर आपको प्रोग्राम में अटेंड करना है, प्रोग्राम करना है, तो वो 100 दिन में आपको गेहूं या चावल ये सब कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है. अच्छा, ओनली यही लेना जो 4 बाउल्स में बताया आपने, विटामिन, फाइबर, पानी ज्यादा। क्वांटिटी क्या होनी है इसकी खाने की? आपका अगर 105 किलो है, आप 4 अंडे ले सकते हो, या अच्छा 125 ग्राम चिकन ले सकते हो. अच्छा। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी बोलिए. my husband is underweight and but he is diabetic, तो ये डाइट उनके लिए ठीक रहेगा? He is underweight. Yes, he is underweight actually, and he wants to put on some weight. Yeah, I think I would let Bhaskaran Bhaiya handle that. I wouldn't suggest it. And we are taking, I means we don't take rice or गेहूं का. Yes. Actually, the diabetic also caused because of this carbohydrate issue. So Yeah, it is a metabolic disorder, right? That is a metabolic disorder. So I'm just giving a suggestion, but we are not taking this, but this will help definitely. Okay, it's not that you have to take all these, correct nutritions. What we have Recording stopped. Whatever we given here, it should be taken regularly, right? Okay. You can follow this, no problem. No, I'm saying we are taking millets. We don't take rice or no. So can we at least continue? in this weight loss program, no millets. Millets has carbohydrates. So this is not part of that program.
Only for, for example, Didi, I can say 1 week if you follow and check the thing. If you track that, you can feel then better, then you can start. Right? Yeah, you try. Because he should, You can try and he should share not your lose. experience. Okay. जैसे माता जी भैया Thank you. मेरी No, यूट्रस he मेरा will not lose. You don't worry. You will not lose it. You will not lose definitely. Actually, it helps. Already the protein will be there, no? Already whatever you are taking, it has that energy. It gives energy definitely. Okay. Okay. जैसे माता जी भैया मेरे ना यूट्रस रिमूव करवाया है अभी 5 months हो गए, तो मुझे अभी क्या ये सब लेना चाहिए? थोड़ा सा अभी तकलीफ रहती है। आपको वेट घटाना है कि नहीं घटना है? हाँ जी, घटाना है। हाँ, तो घटने के लिए कर सकते हैं प्रोग्राम, करिए। ठीक है, ठीक है। भैया ये पेट कम करने के लिए प्रोग्राम है कि नहीं? Yes. Can you tell in English what do you want? Yeah, I just wanted to ask that this program is for decreasing our tummy or not? Visceral fat, yes, absolutely. Tummy fat. This is the best way. This is the best. Intermittent fasting plus no carb diet is the best way to lose visceral fat. Everywhere we are repeating the word no carb, okay, no carbohydrates at all. Is what the first important thing. भैया हमें ये दो ही मील में लेना है ना, मतलब मॉर्निंग में और हाँ लंच नहीं करना। जय श्री माता जी भैया। 2 ही मील बस। हाँ, जय श्री माता जी भैया। जय माता जी। हाँ, हम बोल रहे भैया, मेरे को थायराइड है और मेरा 75 kg वेट है, तो एग वगैरह कितना लेना है? हाँ, एग आप 3 ले सकते हो, 3। क्या मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम? हाँ, सुबह 3 एग ले रहे हो तो शाम को उस हिसाब से चिकन ले लीजिए, या उस हिसाब से पनीर ले लीजिए, उस हिसाब से या हंग कर्ड ले लीजिए, आपकी मर्जी। ओके। जय श्री माता जी। प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन में स्प्राउट वगैरह ले सकते हैं ना? स्प्राउट नहीं, स्प्राउट में आप लिख के देखिए गूगल में, उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप गूगल में पूछ लीजिए इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जय श्री माता जी भैया जैसे एग में ये येलो पार्ट नहीं खाते हैं तो उसको खा सकते हैं, इसमें खा सकते हैं, इसमें एग येलो खा सकते हैं। ओके, और दूसरा जो आप एग ऑमलेट की तरह भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके भैया, और दूसरा ये आपने बताया जो वेजिटेबल्स कौन सी नहीं लेनी है, जो बाउल आपने बोला है वेजिटेबल्स, उसमें कौन सी होनी चाहिए या कौन सी नहीं होनी चाहिए? जिसमें भी, जैसे पोटैटो हो गया, बीटरूट हो गया, आप देखिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं लेना चाहिए। ओके, जय श्री माता जी भैया। थैंक यू भैया, जय श्री माता जी। और कल से फोटो डालना शुरू कर दीजिए, day 1, day 2, day 1 meal 1 from tomorrow morning onwards. कल से Please be sure tomorrow we are going to start. And you see there are some questions repeated. You see the egg is fully easier. No need that question. Actually like that. I think so someone was suggesting to tell no grains. भैया हीमोग्लोबिन कम हो तो क्या ले? फिर हीमोग्लोबिन भी कम है। आपका वेट ज्यादा है? 65 है। तो आपको वेट घटाना कि नहीं घटाना? हाँ जी। हाँ, तो इस हिसाब से आप डाइट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। जय श्री माता जी भैया। स्प्राउट नहीं लेना, देखो ये मुझे खाना है। डायबिटीज है, मेरा इंसुलिन पापा के पास रोज मिलेगा। कोई बात कर रहा है। जय श्री माता जी भैया। हाँ बोलिए। भैया मेरा इंसुलिन भी चालू है, डायबिटिक भी है, तो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए? एब्सोल्युटली, इंटरमिटेंट फास्टिंग विद नो कार्ब डाइट, एब्सोल्युटली। प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ इसकी वजह से। फिर से? प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ इसकी वजह से पूछ रही हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली करिए, अच्छा है। और भैया कल से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो भी मैं डॉक्टर के पास ज्यादा पानी पीजिए। अच्छा, तो 3 से 4 लीटर पानी। क्या लेना चाहिए भैया, बता दीजिए प्लीज। अभी तक नहीं थे क्या आप? अभी कल ही मैं ज्वाइन हुई हूँ। तो अभी स्लाइड्स आ गया है, स्लाइड ग्रुप में डाल दिया है, आप देख लीजिए। ओके भैया, ठीक है। तो कल से शुरू करते हैं। सो एवरीवन यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग योर फोटोग्राफ्स फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, या कल से। और कुछ लोग मेरे ख्याल से 1-2 दिन इंतजार करके शुरू करेंगे, आपकी मर्जी, ठीक है। जय श्री माता जी भैया। भैया एक क्वेश्चन था मेरा।
बोलिए भैया जो बाउल है वो सबके बाउल अलग अलग होंगे, तो कुछ वेट बता सकते हैं कि एक बाउल में इतना वेट मेरे को अगर लेना है? हाँ, जैसा आपका वेट क्या है? 80 हाँ 84 80 के, हाँ 84।